Music Society at LUMS was born in the quest of music lovers at LUMS to find a space that they could call their own. They needed a platform, a voice, and I'm going to say this at the risk of sounding very cliché, a music family. It took about 2 years of struggle for what was once only a dream to become reality. But in 1999, the Music Society of LUMS was born. This was at a time when the music scene in Pakistan was booming, but music was still quite a taboo, even in the relatively liberal atmosphere at LUMS. The Music Society of LUMS was able to give many talented musicians a platform, and for some, the first stepping stone in the rise to success. Well, I was the first music president, but बनाया गया था, सच्ची बात तो ये है। वो मेहनत काफी और लोगों की थी और वो उनके कंप्यूटर साइंस मेजर थे, मैं वेला था। एक लड़का है साद अंसारी, उसने बेसिकली और एक हमारा सीनियर था, उन दोनों का जोश था कि हम म्यूजिक की सोसाइटी बनाएंगे। और बाय द टाइम दे वर रेडी विद द चार्टर एंड एवरीथिंग, तो उनके प्रोजेक्ट्स आ गए और फिर उन्होंने एक वेला आदमी ढूंढा कि जो उनकी सोसाइटी चला सके, तो वो वेला आदमी मैं था। काम तो हमने भी किया, मेहनत तो करनी पड़ी थी एक दफा जब म्यूजिक सोसाइटी शुरू हो गई। The society's struggle didn't end there. It continues till this day to fight against all odds to create a safe space that music enthusiasts can call home. Society events are something that the society has always prided itself on. They've given life to the society, but also enriched the campus experience at LUMS. मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस जो है वो मेरी, वो डेफिनेटली सीनियर ईयर का थ्रिलर है जब खुड्डे लाइन मैंने किया था। और वो मेरे लिए मेमोरेबल इसलिए बिकॉज वो मेरा एक अपना ओरिजिनल था और बाय द टाइम मैं निकला था वो लम्स में बहुत लोगों को याद था। जो जब मैं थ्रिलर पे करा था तो एवरीवन वाज सिंगिंग अलोंग। Classics like our open houses and Thriller Night have lived on since almost the start, and they have been vital for showcasing the vast amount of talent at LUMS. Ladies' Night and indie music are newer additions, but have quickly become society favourites just because of how unique they are. It was the first lady night that we had, and my seniors were Natasha Noorani and Zara Paracha, and we did a rendition of All Along the Watchtower, which I'm not remembering fondly by quality. The fact that it was just 3 girls who pulled off that performance, Jessie bhi thi, Zara is so talented, Natasha so talented, and it was really fun performing with them. LMF is of course our flagship event and the heart and soul of the society. It's that wonderful time of the year for us, and it really is when we all come together. I've never seen the whole campus with people in some corner with an instrument. Generally, everywhere you go, you could see people in the lawns, cricket ground, Koka, library lawns, and generally everyone is practicing. There were 3 mega events going on, and anyone who saw would be there is a musical event going on for sure. सोसाइटी का ट्रिप हुआ था, सबसे अच्छा, सबसे मजा मुझे उसमें आया था। तो वो जो ट्रिप था ना, वो काफी अच्छा था। मुझे वो उसके अंदर काफी मजा आया था। उस वक्त तक दोस्त भी काफी बने थे, और ट्रिप के ऊपर और दोस्त भी बने थे। I remember कि धुंध, ठीक है, and crazy Lahore December fog, and इतनी थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, right? And people were like, यार ट्रिप निकलेगा या नहीं निकलेगा, और हम बस बस पे बैठ गए, and हम बिल्कुल it's something like midnight और हम pitch black में पूरी म्यूजिक सोसाइटी की 2 बसें जा रही है into the fog, right? Into वो जो 3 चौक की fog है, and it just hit me at this time कि यार this is it, this is the start of something beautiful, right? Now all of this may seem effortless, but there have been many ups and downs over the years. These range from problems within our society's culture all the way to going broke.
I mean logistical problems. They held us back at times, but you know what they say, the best things in life are worth fighting for. It seems that as long as there is a place for music in the hearts of the people, the society will stay alive. हम लोग जब society में EC बने थे, we had a lot of debt, and one of my greatest ambitions was to pull off LMF. But the thing is, हमारा debt बहुत ज़्यादा था. So I had those plans, but we collectively, like the EC, we had to make a decision. And so we decided not to do LMF. For the first time since LMF was introduced was my year when we didn't do it. And the reason we didn't do it is because we didn't want to just do it because हमारा time है, हमारी EC के time है, तो हमने तो LMF करके जाना है. We didn't want to leave the next EC with an even bigger debt than the previous one had left us. And because paying off that debt is so hard, and it really affect even छोटे events की quality. The problem with the music society always, at least in my 4 years, was कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे. हमें sponsors इतने आराम से नहीं मिलते थे. जो sponsors मिलते थे वो किसी event के लिए specific मिलते थे. तो when we signed this sponsorship with Varid, so they gave us extra money for the jam room, like to revamp the jam room. तो हमने एक नया bass खरीदा, हमने एक नया drum kit खरीदा, skins वगैरह बाहर से मंगवाए, सब कुछ किया. And pretty much the biggest thing that we did for the music society was कि हमने jam room में AC लगवा के दिया था, जो कि 2010 में हुआ था. उससे पहले, like, you guys don't know how it was to be in that jam room when there was no AC in the summer. आपकी जान निकल जाती थी, मतलब आप जाते थे jam करने और आप बाहर निकलते थे और आप पसीने से भरे हुए होते थे constantly. When I came to the music site, there were several issues actually, and like in the sense it was everything was a little bit more fragmented by then. I think maybe कुछ हो रहा था which had come down. I didn't know much about exactly what's happening up there. There wasn't like a mad sense of ownership. I had also come from another society, so उधर बहुत ज़्यादा culture था कि यार आपने society को own करना है, कि बस आपने जीना मरना है society. And मुझे वो culture बड़ा पसंद था. मैंने वो जो एक चीज़ थी मैं इधर से उठा के इधर ले आया. बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे. जब मैं फ्रेशमैन में आया था, देयर वर अबाउट बहुत कम पार्टिसिपेंट्स थे. में 20-30 पार्टिसिपेंट्स आए थे. सॉफ्टमोर ईयर में वी हैड अबाउट 80 पार्टिसिपेंट, जो कि बहुत हाईएस्ट चले गए थे. लोग सब कह रहे थे कि बहुत अच्छा एलएमएफ हो गया. We felt like there's so much potential in this mega event and we're not doing anything about it. Restrictions in terms of resources, in terms of a lot of things. So we started working for this event एक साल पहले ही, as soon as we got selected, and we were able to get, I think, a very good number. Ishal, 340. Yeah, around more than 300 people, 350 people came to the campus on team. Over the past 20 odd years, we've really had to evolve, adapt, and grow in so many ways. We've always been awesome, of course, but there are a few things that really needed improvement. The scale of this society has multiplied. We've gone from a small, tight-knit group to a big, still very tight-knit community of music lovers, and every year our events keep getting bigger and better. And of course, we've shifted our focus from mainstream to indie music, with an all-new indie showcase event at LMF 21 and a series of stories highlighting indie artists. We've made efforts to promote South Asian indie music and promote underrated and undervalued artists. Me and Mari especially were super excited about the indie music food festival, right? तो वो हमने सोचा था यार ये एक बार ये हो जाए ना, क्योंकि the thing about the Thriller was कि Thriller's music society only. LMF was कि it has like superstars were coming in. There was a gap in the middle कि यार लाहौर की भी कुछ मजे की musician थे who need a platform. और उधर वो बड़ा sweetly fit होता है into like the idea हमारा था कि दिसंबर में एक indie music. जब मैं आया था मुझे किसी इंडी बैंड का नाम नहीं पता था. बाय द टाइम मैं निकला हूँ बिकॉज ऑफ इंडी फेस्टिवल और LMM जो होता है लाहौर म्यूजिक फेस्टिवल, लाहौर म्यूजिक मीट, उसमें भी सोसाइटी के बहुत लोग वॉलंटियर करते हैं. तो बाय द टाइम मैं निकला हूँ मुझे सबका पता था, इंडी सीन में सबका पता था. One of the things that I did want to do was to make it more inclusive for women. So that was like one of the things that I wanted to do to kind of make girls comfortable or to kind of increase their presence in the society. वरना इसी में आती भी like एक लड़की थी या इस तरह होता था.
जब स्टैंड अप करते थे लम्स के अंदर तो हमारा मजाक भी उड़ाते थे कि हर कोई एक दूसरे को सर करके एड्रेस करता है और ये मतलब म्यूजिक सोसाइटी में इस तरह सेक्सिज्म है बहुत, और जो कि wasn't true, लेकिन ये जरूर है कि रिप्रेजेंटेशन के मामले में दिस वाज ट्रू के स्टेज पे हमेशा आपको बंदे जैसे नजर आते थे, बंदियों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। तो दिस वाज द चेंज जो मैंने फिर देखा कि इवेंचुअली जाके एटलीस्ट सीनियर में आके ये चीज़ बहुत ज़्यादा वापस बदल गई और हम बेहतर होना शुरू हो गए। और बाय द टाइम मैं निकला उस वक्त तो मैं बोलूँगा कि लड़कियों और लड़कों की तकरीबन इक्वली पार्टिसिपेशन होती थी सोसाइटी में, ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज। When I was a freshman, apparently the seniors were like a bit removed from like the freshmen didn't feel like they were as approachable, and I definitely think that in our senior year, like anyone, whatever batch you're in, they would just be able to come up to us. I mean, I probably became friends with so many freshmen in my senior year because of the fact that like my sisters were the freshmen of the music society, and then I already knew their friends, and just generally the environment, anybody in the EC, I think was very approachable. पहले सीन ये था कि सोसाइटी में कुछ लोगों की कॉल्स थी, अब ये कि एटलीस्ट जो मैंने लास्ट देखा था सब लोगों के लिए ये सोसाइटी है, एंड जो लोग चाहते हैं वही चीज़ लाइक सोसाइटी के कल्चर में और अदरवाइज वो रिफ्लेक्ट होती है। एंड इफ यू आस्क मी लाइक 2015 में मैं अगले 4 सालों में क्या देखता हूँ, आई प्रोबब्ली वुडंट हैव इमेजिन्ड कि इतना इंक्लूसिव सीन होता आ गया। It was really restricted पहले। जब हम लोग आए थे ना तो म्यूजिक सोसाइटी की पता नहीं, मुझे लगता है या सबको लगता होगा कि म्यूजिक सोसाइटी की वो वाइब थी, थोड़े अंडरग्राउंड म्यूजिशियंस टाइप नहीं होते, थोड़े कूल होते हैं, बाकी लोगों से अलग रहते हैं और बस उनका ही अलग ग्रुप होता है तो उनके साथ कोई हैंग आउट नहीं कर सकता, थोड़ी सी उस तरह की फील थी। और अब बहुत इंक्लूसिव हो गई सोसाइटी। When we joined, it felt very exclusive. I mean, it felt good to be a part of something exclusive. I think it was so important for us to open up more as a society, and the more people that joined, the more different musicians we were exposed to, and all of that has led to the society being a really diverse society. Like the kind of people that you meet here, it's not like one type of person only. It's not just one type of person can fit in this. Me personally, I focused a lot on Bollywood music, Pakistani music, classical music and all. And when I joined the society, which is around I think 6 years back from today, तो कोई भी अच्छा अगर लोगों को शौक भी होता था ना तो people didn't used to come सामने, और इस तरह की परफॉर्मेंस उस तरह से लोग इतनी ज़्यादा नहीं करते थे। एंड जो ज़्यादा बॉलीवुड इंडियन टाइप म्यूजिक को पसंद करने वाले लोग थे, they didn't even end up joining the society, which was wrong because the society should be open for everyone. Everyone should feel comfortable singing whatever they want to. सर्कल छोटा हो गया। One eternity later. Over the years, we realised that covers didn't really capture our passion for music, so we started to focus on producing original music. Our talented musicians collaborated with our music producers to create many originals that remain true to their stories. We released our first album in 2018 called Ibtidai Shor, and since then we've had many more society originals released on our social media platforms and even performed at the Indie Music and Food Festival. Original music is our pride, and we hope to continue to release even more in the years to come. Yunus was the first one who came up with the idea कि
सोसाइटी की एक मिक्स टेप एल्बम होनी चाहिए, एक कंपाइलेशन होनी चाहिए जिसमें ओरिजिनल म्यूजिक हो. एंड ही गेव मी एंड रुशान डेडलाइंस के तुमने मतलब बाय द टाइम हमारा एकेडमिक ईयर एंड होता है तो मुझे 6-7 गाने चाहिए. 7 गाने. हाँ, एंड वी अचीव्ड दैट. मतलब हमने कुर्बान करके अपनी सोशल लाइफ स्टूडियो में वो जो जिस तरह साल गुजारे ना, मुझे और रुशान को पता है. कीप इन माइंड, हम दिस वाज लाइक फर्स्ट डेब्यू, मतलब क्या कह लो, काम एज अ सोसाइटी जो मतलब प्रेजेंट हो रहा है बाहर पूरे मुल्क. It feels proud to say that generally, 2 years ago we were able to release our first original album. I mean, like it's not, and that too like produced, directed by our own musicians, people from the music society. जब मैं सोसाइटी में था ना, तो मैंने क्या कहते हैं राफे, महद और बाद में अस्मीर और इदनान के साथ भी ज़रा यही कोशिश कर रहे थे कि हम सिखाने वाला भी एक कल्चर बने वहाँ पे, और लाइक लोगों को लाइक स्किल्स के साथ इक्विप कर दें जो कि बाद में उनको इनेबल करे कि वो अपना म्यूजिक भी ओरिजिनल बना सकें. The one thing that happened during my time, वो अहमद ने स्टार्ट किया था, and that was the live sessions. हम लोगों ने कम किए थे उस ज़माने में. I think we did like 2 or 3 क्योंकि हमारे प्रोडक्शन इक्विपमेंट का मसला हो रहा था or something like that. But that's something we started and then we gave up on it, and then I think after we graduated, so you guys picked it up again. It's like it has to be more about the music. And जो 2018 even मेरे वाले बैच में भी ना स्टार्ट हुआ था कि we started live sessions, recording music, making music. उससे पहले वो चीज़ commonplace वो exist नहीं करती थी. So, we were right in the middle of reviving old society events, bringing in new society events, releasing another album, and ending the 2020 term with some massive hits when Mr. C decided to pay us all a year-long visit. 20th एनिवर्सरी हुई थी मेरे टाइम पे, तो हमने स्पेशल बर्थडे रखी थी, स्पेशल केक मंगवाया था. म्यूजिक सोसाइटी LUMS टर्न्स 20 और वो हमने जैम रूम में सबने काटा. और उसके बाद मैंने एक बड़ी पैशनेट स्पीच दी कि फॉल सेमेस्टर इतना फिट रहा है, LMF हो गया सब, और आई प्रॉमिस यू स्प्रिंग 2020 जो है वो फॉल से भी 10 गुना ऊपर होगा. और उसके इमीडिएटली बाद कोविड हो गया. We were a little bummed out, as I'm sure you all were, but that didn't stop us. We're hopefully nearing the end of the pandemic, and we're proud to say that we have released covers and originals, jam sessions, arranged events, and kept the spirit of music alive even in the bleakest of times. Even like in times like these with COVID, it's amazing. It just makes me super proud to see that there is a sense of direction. We used to be a society that used to just do events, and music is a lot more than just performing live in a sense. I know you guys can't have events right now, but like I was just looking at the poster for open house, and I was like, open house, like it's still happening. I just, for me it was like, with COVID I don't think there's going to be events this year, but like the open house is happening, like even if it's online, but it's still happening. And the people are going to show up and people are going to come to sing because it is a pretty wholesome event like that. We as an EC there were a lot of responsibilities और कोरोना चल रहा था, पेंडेमिक था, एक बहुत टफ टाइम्स के अंदर जब सब स्ट्रगल कर रहे थे एंड ऑल द सोसाइटीज आर इन सर्वाइवल मोड, और आई थिंक वी डिड relatively fine, and we tried our best. That's all we could do, quarantine होते हुए घर में बैठ के, and that's what we did. We know now, more than ever, that music has the power to bring people together, to give them the one thing that they need when things seem to be at their worst: hope. म्यूजिक साइड इज लाइक अ फैमिली. मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे म्यूजिक साइड से हैं, और लम्स में पहले 2 साल बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए. म्यूजिक सोसाइटी में इट हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत दोस्तियां मिली यहाँ पे, और इंशाल्लाह वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स हैं और हमेशा साथ में. You want to reach a point कि anyone who's ever been in the music society 10 years from now, right? You want to come back and you're like, yaar, this is somebody जो मेरा अपना बंदा है and I can talk. We have something which is greater than LUMS, which connects us, which nobody else has. It's greater than all of us. When we would come to the jam room,
एक बहुत डिफरेंट वाइब, एक डिफरेंट सेटिंग पे हम लोगों को देखते थे और फॉर मी इट वाज मोर लाइक अ सेफ हेवन जो हम यहाँ पे आके ढूंढ रहे थे लोगों के अंदर। आई वुड सी पीपल जैमिंग और मुझे पता भी नहीं होता था कौन सा गाना गा रहे हैं और किसने गाया था, किसने बजाया था, बट एक वाइब थी जिसके अंदर हम ना बस वो चले जाते थे एंड आई थिंक आई लव दैट। Yeah, the music society was literally my comfort zone, as cliched and cheesy as that sounds, but it was. It was literally like a safe haven, you know, like the jam room was literally like that. Like if I wanted to just disappear and not run into anyone, I would literally just go to the jam room and like lock myself in. I always dreamt of having like a room full of instruments, preferably in my own house, but you know, since that couldn't happen, you know, when we came here, we did have a room full of instruments that you can just show up here and learn it and learn something whenever you want. You know, it's a whole other thing that half of the stuff is not functional, but you know, you can just walk in here at any time you want, and everything's just free for you to use to learn. Over my 4 years, there were good days or there were bad days. LUMS कभी overwhelming हो जाता है, तो सब कुछ छोड़ के जब मैं वापस आ गया जब स्टूडियो बैठ जाता था ना, तो सब चल हो जाता था। तो इस सेंस में भी सेफ स्पेस आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली हॉस्टलाइट्स के लिए। आई थिंक ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम लोग हर वक्त किसी ना किसी के साथ होते हैं कैंपस में, तो वी नीडेड दैट स्पेस जो शायद मेरे रूम में मुझे नहीं मिल रही थी। तो वी वुड जस्ट यू नो कम टू द जैम रूम और हम बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट पकड़ा होगा और बस नोट बजा रहे हैं और बस देख रहे हैं ये कॉर्ड है, अच्छा इस तरह 1000 बार बजा के देखा हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों उस टाइम बहुत मजे का लग रहा है बजा के, तो फील आता है। These 4 years of your life are literally going to be the best 4 years of your life. I'm not even kidding. Make the most of it. Actually, actively take part in the society. Don't feel like you're being cool by missing out on it. Don't sacrifice it for other stuff. Because trust me, every little memory you make there now, it'll stay with you. Cherish those memories and meet these amazing people. Because you'll meet your friends, but you're never going to meet people outside your box. And this is a way to actually come across those people. So like, meet them and trust me, it's a whole different experience. Like it's the best thing that's gonna ever happen to you. So basically जब मैं third year में भी था, when I was the treasurer, I was thinking of leaving the society because मुझे ये फील आई थी कि पता नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फोकस नहीं करना, मुझे बहुत मेहनत लग रही थी। बट नाउ इफ आई लुक बैक, अगर वो डिसीजन लिया होता तो मतलब मेरी लाइफ का एक इतना मेजर पार्ट है जो कि अभी तक मेरे साथ है, वो आई वुड हैव कंप्लीटली मिस्ड आउट ऑन दैट एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इवन दोस्तों के साथ जो आपका टाइम होता है, सीखते जाओगे साथ साथ, आपको बाद में वो बातें भी याद आएंगी, चीजें भी याद आएंगी, तो ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। It's not just about like what you get out of the society, it's also just like the memories that you make along the way. And I would say that like appreciate all of those, and like those things that you can say that you've done are not the only important thing. It's like the people you're doing it with, and just like it's having fun. It's like university society. It's not supposed to be just work. And I hope that it doesn't ever feel like just work. I hope that it feels like something that you genuinely enjoy and like makes you really happy. The music society has always been about two things and two things only, and that's music and people. And I think it's given me that, it's given everyone that. And we never needed anything more than this or anything less. It's exactly this. क्योंकि लम्स से निकलने के बाद और सोसाइटी छोड़ने के बाद जो आपको असल जो आप मिस करते हो ना, वो छोटी छोटी चीजों की फील्स हैं, ठीक है? जैसे हाउ डिड द खोका जैम फील जब सब जमे हुए, हाउ डिड कॉलिंग समवन आउट सोसाइटी को ऐसे सर कह के और सब जमा हो गए सर ऐसे, मतलब वो जो उसकी एक वाइब होती है ना, वो होती है जो आप असल मिस करते हो। वो छोटे मोमेंट्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं। जब हमने यार डिनर के वक्त गिग किया था, या फिर जब हमने स्टेज सेटअप किया था सारी रात जाके, वो जो स्ट्रगल होता है ना कि आप सारा स्टेज को ग्राउंड अप खड़ा करते हुए जो देखते हो, जो उसकी मेहनत होती है और जो उसकी ख्वारी होती है, ये जो फील्स होती हैं जो आपको कभी नहीं भूलती सारी जिंदगी। हाँ, जैसे म्यूजिक सोसाइटी यही रही है कि बस आई थिंक द राइट वर्ड इज बस एक फील है कि बस जो फील होता था कर लेता था इस सोसाइटी में। पहले मुझे फील होता था नहीं आना, मैं नहीं आता था, फिर मुझे फील होता था आना है, फिर मैं आ जाता था। मुझे फील हुआ बेस पे जानी है, मैं बेस पे जा रही, बस इस तरह ही ना बस म्यूजिक सोसाइटी चलती गई। आई थिंक बस यही है, बस एक फील है। म्यूजिक सोसाइटी एक कैफियत है, ठीक है? आप लोगों को म्यूजिक सोसाइटी से निकाल दोगे मगर आप म्यूजिक सोसाइटी को लोगों से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इट्स दैट वन थिंग जो जिसने हमें आपस में कनेक्ट किया और व्हिच टुक अस थ्रू लम्स, और हम हमेशा उसे फॉन्डली लुक बैक करते हैं उसके ऊपर।
This was just the tiniest glimpse into our story, but fear not, picture abhi baki hai mere dost. There's so much that we have to say, or should I say sing, and so many more platforms to build for unheard voices. We've been through a lot, but as long as there is music that inspires us, we'll continue to produce and promote it. We're in this together. See you in another 10 years, hopefully. In the meantime, bas gol gol ghoom, sari raat jhoom, ye dil ke raste hain. Love, your music family.